In this video, I'm going to share my experience of hiking to Kumara Parvatha, which is Karnataka's fourth highest peak. And although I wasn't allowed to complete the trek, it was still a nice experience. The trek starts from KukkeSubramanya temple, which is about 300 kilometers from Bangalore. Once you reach the starting point, there's a small gate that leads to the forest section of the trail, which is about 6 kilometers. And after that, you reach Pattarmane, which is the first campsite. I'm Rahul, and this is my travel companion Buddy, and together we love to explore. We love to hike and camp together. In last few years, I've been privileged to visit to the Himalayan range in north, to the coffee states in the south of India, and to many other hills around Bangalore. For now, we mostly trek over the weekends, and on this channel, I want to share my journey of trekking, hiking, and camping through some of the remote places around South India and northern part of India. So stay tuned. हमारा ट्रैक अब स्टार्ट हो चुका है. एक छोटा सा आर्च जैसा गेट है, वहाँ से एंटर करना है एंड देन अब ये आई थिंक 6 किलोमीटर्स का ये फॉरेस्ट के थ्रू हाइक है. अभी 2:15 हो रहा है एंड अप्रॉक्सीमेटली हाफ पे हम लोग आ चुके हैं एंड वो है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था. Right. So the most disappointing thing जो मुझे लगा था कि हो सकती है, that has happened. Essentially, I am not allowed to trek to Kumar Parvata. मैं अभी फॉरेस्ट ऑफिस तक आ चुका हूँ, which is 6 kilometers from जो विलेज है जहाँ से स्टार्ट करते हैं. बट उसके बाद फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने मुझे बोला है कि लाइक आई कैन नॉट गो फर्दर. मैंने बहुत ट्राई किया कन्विंस करने का उनको, बट लाइक दे डिडंट गेट कन्विंस्ड. साफ मना कर दिया उन्होंने. उन्होंने एक्चुअली रिक्वेस्ट किया मुझसे कि जाओ वापस. So yeah,
talk more about it. So, what has happened is कि they are saying that pets are not allowed, and मेरे साथ of course buddy है, so I can't take buddy with me to the peak. अगर मुझे जाना है तो मुझे buddy को I'll have to leave him at the forest office, which I'm not comfortable with. So after about 1 hour of trying to convince them, मैंने decide किया कि it's not worth it. So I'll just go back from here. आज यहाँ पर ही कैंप करूँगा कहीं पे, एंड देन उसके बाद कल मॉर्निंग में सनराइज देखने के बाद निकल जाऊँगा. सिट हियर बड़ी, सिट हियर, गुड बॉय. ओके, आई थॉट कि थोड़ा लोकेशन चेंज करके फिर बात करता हूँ. सो व्हाट हैपेंड has happened, and one good thing is कि एटलीस्ट मैं यहाँ तक आ पाया हूँ, बिकॉज फॉरेस्ट ऑफिसर ने मुझे बताया कि अगर मैं वीकेंड पे आता या नीचे जो मेन विलेज है वहाँ पे जो गेट है एंट्री की, अगर वहाँ पे कोई गार्ड होते तो दे वुड हैव स्टॉप्ड मी देयर ओनली इफ़ आई हैड कम विथ माय पेट. सो इन अ वे आई एम लकी कि मैं एटलीस्ट वहाँ से ही वापस नहीं गया, एंड आई वाज एबल टू कम टू दिस फर्स्ट व्यू पॉइंट एंड द फर्स्ट ऑफिस लोकेशन, एंड पूरा फॉरेस्ट एरिया कवर किया, which was a very nice experience. It was tough as well. And so yeah, like मेरे साथ बडी भी है, इतना अच्छा व्यू है, and I'll be able to watch the sunset and the sunrise and like camp here for one night. So I'm just glad that I'm able to do that. After watching the sunset with Buddy, I'm feeling very grateful. Here also I can join. Yeah. So until I get some what do you call that? Financial stable things, so I can manage with those. Yeah, if you join there as a trek, trek leader or whatever, right? Then it's just easy then, right? Like you get the experience also, and like. Exactly. That's what I'm thinking.
is a huge rock. काफी अच्छा लग रहा है. So I think I will stay here for some time. And बड़ी को भी उसका breakfast कराना है. Then after that we'll head down. Damn. This is the arch जहाँ से हमने start किया था. So yes, we are back. That's okay. YouTube channel है. Yeah, like I've started recently. Just a few videos. Name? Rahul. बड़ी कैसा लग रहा है? So back to the temple. Thank you, God ji.